I'm standing at Bengaluru's Kumbarpet Wholesale Market, which is located in the iconic Pete region of Bengaluru. Today, a massive fire broke out behind me in a shopping complex which houses about 60 to 70 stores. So far, no casualties or injuries have been reported from the location, and the fire has been limited by the fire personnel to just one shopping complex, and they have ensured that the fire doesn't spread to neighboring buildings. I'm with Chief Fire Officer Jairam, who arrived here early in the morning. Sir, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ? ಸುಮಾರು 8:40 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೈರ್ ಕಾಲ್ ಬೇಕು, ಆಫೀಸರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ರೂಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸು, ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ಸು, ಆಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾಯ್ಸು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಅಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 100 ಫೀಟ್ ದೂರನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈಗ್ರೌಂಡ್ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತರಬೇಕು. ಸರ್, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಯಾರೋ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಅದೇ ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿರೋ ನೀರು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ. ವಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. Around 150 fire personnel have been working since 8:30 in the morning to put out the fire, and as you can see, they're continuing their work. They've been working in 3 shifts, and they have arrived at the location with 14 fire tenders. Now the big challenge for the fire personnel is to navigate the very narrow streets of Kumbarpet. So some of the fire tenders couldn't fit through the narrow streets. So what they had to do was use several meters of pipes to transport water and put out the fire. They have also resorted to something called as controlled burning to ensure that the fire doesn't spread to the neighboring buildings. I'm here with Subhash Daga, who owned a toy store inside Lakshmi Commercial Complex, which burned down. सर, आज सुबह आपकी ये जो बिल्डिंग है ये जल गई है, जिसके अंदर आपका शॉप था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आपको कब पता चला कि ये बिल्डिंग जल गई है? आज सुबह यहाँ ये जो इंसिडेंट हुआ, दुर्घटना, जो मेरे को 7:45 पे फोन आया किसी का कि ऐसा लक्ष्मी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गया है। तो मेरे को घर से वहाँ से रवाना होकर के 8:15 पे मैं यहाँ जब पहुँचा तो फायर ब्रिगेड का एक गाड़ी आ चुका था। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अगर एक छोटी गाड़ी होती तो शायद ये जो आग थी जल्दी कंट्रोल हुआ होता शायद। हाँ, ये तो हम महसूस करते हैं, क्योंकि गाड़ी दूर रहती है, फिर पाइप लेके आने तक समय लगता है, और गाड़ी का भी ऐसा लग रहा है मेरे को कि दूसरी गाड़ी पानी की जो आने में उसमें भी थोड़ा समय लग गया कहीं ना कहीं। उसके बाद में गाड़ियां बहुत थी, लेकिन पहली गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी आने में ऐसा लग रहा था कि कुछ डिले हो गया होगा, तो वो जो हो गया वो हो गया। लेकिन उसके बाद में ये जरूर है कि कुछ छोटी रीचिंग की उनके पास में ऐसा हो, क्योंकि पाइप इतना लंबा खींचना उसमें समय तो लगता है, तो कोई छोटी गाड़ी एक बार इमीडिएट आ जाए, गैस वगैरह आ जाए। मैं यहाँ अनुभव करता हूँ, यहाँ से पहले भी इधर हुआ था एक फायर इंसिडेंट, तो वो तो और ज्यादा तंग गली है और ये भी तंग गली है। तो मेरा एक सजेशन जरूर रहेगा कि फायर ब्रिगेड के पास में कुछ छोटी गाड़ियां भी होनी चाहिए, ताकि उन गलियों तक वो पहुंच बना सके। The fire was brought under control by 3 p.m. पहले जो था नीचे पीछे डेकोरेशन का सामान था, डेकोरेशन का पहले उसमें शॉर्ट हुआ, वो सब गन वगैरह रहती है ना, पॉटी पम्प्स वगैरह स्प्रे करने का गन, पहले उसमें हुआ, बाद में हार्डवेयर में आया। पूरा फर टॉयज़ का था, प्लास्टिक आइटम्स का था, कॉस्मेटिक्स का था, पूरा बिल्डिंग में आग लग गया। जो फर्स्ट फ्लोर पे था उसमें बीड्स वगैरह आइटम सब था, वो फैंसी आइटम, क्राफ्टिंग आइटम का पूरा था। जो क्राफ्टिंग आइटम है वो बहुत ज़्यादा था, वो पूरा फर्स्ट फ्लोर था, उनका ज़्यादा गया है। The source of the fire is said to be a short circuit which happened in a fancy store. From there, the fire spread to a perfume store, and due to the presence of flammable liquids, the fire rapidly spread throughout the building, and most of the shops have been burnt. रमेश कुमार मेरा नाम है, दुकान हमारे स्टेशनरी का था, लेकिन उसमें 5 ईयर से इधर हम रहते हैं, लेकिन हमारा कोई ये नहीं हुआ इफेक्ट। पूरा आइटम था पूरा बाहर ले लिया है, हमारा कोई इफेक्ट नहीं। जो भी सेकंड फ्लोर का दुकान है उनका बहुत ये हो गया है, और दुकान अंदर भी बहुत सारी थी, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है।
This is the second time in 6 months that a fire has broken out in the area. The last time, a family of 5 was burnt alive. ಆಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಈಗ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಫೈರ್ ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 3 ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. The wholesale market in Kumbarpet and neighboring Chickpet have footfalls that are in lakhs on most days. However, most of the shops are packed together, densely packed together, and fire safety norms are virtually non-existent. Most of the footpaths have been encroached. Unless the community takes fire safety seriously, it's possible that incidents like this could occur again. With camera person Prashant, this is Nikhil Karyapa for Deccan Herald.